इसलिए जो प्रीवियस टेस्ट था डेट वाज अबाउट जेनेटिक्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, और जो हमारा आज का असेसमेंट टेस्ट है, अब सेकंड जो टेस्ट है जेनेटिक्स के लिए, दैट इज क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज। इंस्ट्रक्शंस आर द सिमिलर। आपने क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप यानी स्लाइड बाय स्लाइड अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को मार्क करना है। क्वेश्चन की नंबरिंग को जो है आपने नोट डाउन जरूर करना है, और अपने क्वेश्चंस को भी आपने नोट डाउन करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन है उनसे मजीद आपको जो है वो आइडिया होगा कि इनको वाइस वर्सा करके या इसी टाइप के जो क्वेश्चंस मजीद बन सकते हैं। तो आपने अपने नोट्स भी साथ साथ तैयार करने हैं और अपने टेस्ट को भी सॉल्व करना है। टेस्ट जो है वो हर टेस्ट की तरह मैं ज़रूर सबसे कहूँगी, सब स्टूडेंट से, कि स्टेटमेंट को बार बार पढ़िएगा और 1 से 2 बार पढ़ने के बाद ही अपने आंसर जो है उसको मार्क कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए 40% प्रोटीन एंड 60% डीएनए, ऑप्शन बी 70% प्रोटीन एंड 30% डीएनए, option C 60% protein and 40% DNA, and option D 50% protein and 50% DNA. Question number 2. Cytological basis for the law of heredity was demonstrated by option A Thomas Morgan, option B Hermann Muller, option C E Strasburger, and option D both A and B. Question number 3. Chromosome numbers was established by option A Tijo and Levin, option B Morgan and Muller, option C Robert and Kornberg, and option D Sutton and Bowlby. Question number 4. Haploid set of chromosome is also known as option A proteome, option B genomics, option C genome, and option D gene. आई होप आपने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 के आंसर्स को मार्क कर लिया होगा। आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि 60% प्रोटीन एंड 40% डीएनए, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है डी, थॉमस मॉर्गन एंड हर्मन मिलर बोथ जो है उन्होंने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ हेरेडिटी को ऑन साइटोलॉजिकल बेसिस, डिमॉन्स्ट्रेट किया था बेसिकली। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है सी, रॉबर्ट एंड कॉर्नबर्ग, जिन्होंने क्रोमोसोम नंबर जो है उनको स्टडी किया था, एस्टैब्लिश किया था डिफरेंट स्पीशीज का। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका राइट ऑप्शन है जीनोम। हेप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो तो जो सेट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है डेफिनेटली उसको हम जीनोम ही कहेंगे। Next question number 5. During metaphase, size of chromosome in humans are micrometer, option B 8 micrometer, option C 12 micrometer, and option D 3 micrometer. जैसे कि यहाँ पे मेटाफेज में क्रोमोसोम का साइज पूछा गया है, इसी तरह जो डिफरेंट फेजेस है मियोसिस की या माइटोसिस की, उसमें भी जो है वो क्रोमोसोम का साइज जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Question number 6. Rod-like chromosomes which have the centromere on the proximal end are known. ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में से जो उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, आई रिपीट द स्टेटमेंट, rod-like chromosomes which have the centromere on the proximal end are known. Option A telocentric, option A acrocentric, option C metacentric, and option D submetacentric. Question number 7. During mitotic prophase, the chromosomal material become visible as very thin filaments called option A chromatin, option B chromatid, option C chromonemata, and option D chromomere.
Question number 8. Centromeres contain specific DNA sequences forming a disc-shaped structure called option A kinetochore, option B telomere, option C chromomere, and option D none of these. Question number 9. Kinetochore represents dash structure. Option A bilaminar, option B trilaminar, option C unilaminar, and option D multilaminar. आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए 5 माइक्रोमीटर, यानी मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम का साइज है इन ह्यूमन दैट इज 5 माइक्रोमीटर। एंड जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट ऑप्शन है ए टेलोसेंट्रिक। When centromere is on the proximal end of chromosome that is known as telocentric. And question number 7 का राइट ऑप्शन है सी क्रोमोनिमेटा। माइटोटिक प्रोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम थिन फिलामेंट्स की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज क्रोमोनिमेटा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है काइनेटोकोर। एंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी ट्राइलैमिनर। काइनेटोकोर जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर होता है जी ट्राइलैमिनर। ट्राइलैमिनर का क्या मतलब है जी? ट्राइलैमिनर का मतलब है कि आउटर और जो उसकी इनर लेयर है वो इलेक्ट्रॉन ओपेक होती है और जो मिडिल लेयर है वो ट्रांसलूसेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 10. During mitosis, dash microtubules of mitotic spindle become attached to kinetochore. I repeat, during mitosis, dash microtubules of mitotic spindle become attached to the kinetochore. Option A 4 to 40, option B 4 to 20, option C 4 to 60 and option D 4 to 80. हमने नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बताना है जो कि काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोटिक स्पिंडल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11. Dramatic representation of karyotype of species is known as option A ideogram, option B cladogram, option C echogram and option D chromogram. Question number 12. Between the peripheral heterochromatin and the nuclear heterochromatin are regions of lightly staining chromatin that is known as, I repeat the statement, between the peripheral heterochromatin and the nuclear heterochromatin are regions of lightly staining chromatin is dash. Option A dispersed chromatin, option B constitutive chromatin, option C satellite chromatin and option D none of these. आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है ए 4 to 40 एंड क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप जो क्रोमोसोम की रिप्रेजेंटेशन है उनके स्ट्रक्चर्स की उनके साइज की दैट इज नोन एज आइडियोग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका राइट ऑप्शन है ए डिस्पर्स्ड क्रोमेटिन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14. Lionization is option A autosomal inactivation, option B X inactivation, option C autosomal inactivation and option D X activation. Question number 15. When nucleosomes are in close apposition, they form the option A 10 nanometer fiber, option B 30 nanometer fiber, option C solenoid fiber structure. Question number 16. Polytene chromosome, also termed as dash chromosome. Option A salivary gland.
Option B, thyroid gland. Option C, pituitary gland. And option D, adrenal gland. आई होप आपने क्वेश्चन 14 से 16 के आंसर्स नोट डाउन कर लिए हैं। जी, इनको आंसर की से चेक करते हैं। लायनाइजेशन बेसिकली एक लियोन्स थ्योरी या लियोन सॉरी हाइपोथेसिस है जिसके अकॉर्डिंग एक्स क्रोमोसोम जो है, जिसमें एक अगर एक्स क्रोमोसोम की जो कॉपीज है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल में वो इनएक्टिवेट हो जाता है। 14 जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन है बी, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, लायनाइजेशन इसको कहते हैं और इसकी फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 15 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है ए, 10 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा when nucleosomes will be in close apposition. एंड क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका राइट ऑप्शन है ए, स्लैवरी ग्लैंड। पोलिटीन जो है बेसिकली लार्ज क्रोमोसोम्स हैं जो कि स्पेशली प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में, और ये जिनको स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स भी कहते हैं। Question number 17. Which molecule is responsible for the packing of nucleosome into 30 nanometer fiber? Which molecule is responsible for the packing of nucleosome into 30 nanometer fiber? Option A H1, option B H2, option C H3 and option D H4. Question number 18. Lamprecht chromosomes are found at dash stage. Option A diplotin, option B zygotine, option C leptotine, and option D none of these. Question number 19. Human chromosome contains dash nucleotides in DNA. Total number of nucleotides बताना है. Option A 240 million, option B 140 million, option C 150 million, and option D 170 million. Question number 20. Repulsion and coupling are two phases of option A mutation, option B chiasmata, option C linkage, and option D crossing over. आई होप आपने क्वेश्चन 17 to 20 के आंसर्स को मार्क कर लिया होगा। जी, आंसर की से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, H स्टैंड्स फॉर हिस्टोन। तो जो 17 यानी H1 इट मींस हिस्टोन 1। ये न्यूक्लियोसोम की जो पैकेजिंग है इनटू 30 नैनोमीटर फाइबर दैट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हिस्टोन 1 मॉलिक्यूल। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ए, डिप्लोटीन। लैम्प्रेस्ट क्रोमोसोम बेसिकली जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोम होते हैं जो कि जर्मिनल वेसिकल्स में और उस साइट्स की जर्मिनल वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं और ये डिप्लोटीन स्टेज में जो है वो विजिबल होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है 140 मिलियन यानी कि ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है सी, लिंकेज। Repulsion and coupling are two phases of linkage. Question number 21. The phenomena in which parental combinations of characters appear together for two or more generations is known as option A complete linkage, option B incomplete linkage, option C complete dominance, and option D incomplete dominance. सवाल पूछा जा रहा है कि वो फिनोमेना जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर अपीयर टुगेदर फॉर 2 और मोर जनरेशंस, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर कुछ क्रोमोसोमल करेक्टर रीअपीयर हो रहे हैं तो उस फिनोमेना का क्या नाम होगा। Question number 22. A white-eyed female Drosophila is crossed with red-eye male. Which statement is correct regarding to this phenomena? ऑप्शन हमें दोनों बता दिए गए हैं क्वेश्चन के।
कि जो फीमेल है जी वो वाइट आई है और जो मेल है वो रेड आई है। ऑप्शन ए है जी none of the female will have red eye। ऑप्शन बी है none of the female will have white eye। ऑप्शन सी है 50% female will have red eye एंड ऑप्शन डी है 25% female will have white eye। क्रॉस बनाइए और उसके बाद अपना आंसर जो है उसको चेक कीजिए कि किस ऑप्शन से ये जो है वो मैच करेगा। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं ताकि सब स्टूडेंट्स हैं वो अपना क्रॉस उसको खुद कंप्लीट कर लें। आंसर की से चेक करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है ए कंप्लीट लिंकेज, मतलब करेक्टर अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट हो रहे हैं तो वो कंप्लीट लिंकेज का फिनोमेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका राइट ऑप्शन है बी। देखिए हमें क्वेश्चन में क्लियर कर दिया गया कि जो फीमेल है जी वो वाइट आई है और मेल जो है वो रेड आई है। और अगर आपको याद हो तो जो ड्रोसोफिला में आई कलर है वो एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की कैरेक्टर की एग्जांपल है और ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो रेड आई की जीन है वो लोकेट करती है। अगर फीमेल जो है वो वाइट आई है तो उसके दोनों एक्स वो हैं जो कि स्मॉल डब्ल्यू के साथ होंगी और मेल अगर रेड आई है तो उसके पास एक एक्स डब्ल्यू प्लस यानी कि वाइट आई रेड आई की जीन है। अब क्योंकि जो फीमेल है उसने एक एक्स जो है वो मेल से लेना है और एक एक्स जो है उसने फीमेल से लेना है, तो फीमेल के पास डेफिनेटली एक ही एक्स की पॉसिबिलिटी है जो रेड आई के आ सकता है, वो भी फादर से आएगा, मेल फ्लाई से आएगा और वो रेड आई हो नहीं सकती है। नन ऑफ द फीमेल हैव वाइट आई। वाइट आई होने के लिए फीमेल की क्या जरूरी है कि उसके पास दोनों एक्स जो हैं वो रिसेसिव यानी कि स्मॉल डब्ल्यू क्यों, लेकिन क्योंकि फीमेल ने एक जो जीन है एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेना है और फादर जो है वो रेड आई है और रेड आई का मतलब है कि उसके पास एक्स कैपिटल डब्ल्यू का क्रोमोसोम है, तो फीमेल जो है वो वाइट आई होगी क्योंकि जो रेड आई कलर है दैट इज अ डोमिनेंट एक्स लिंक ट्रेट। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। Question number 23. Genes which are widely located in chromosomes and have chances of separation by crossing over are complete linkage, option B incomplete linkage, option C complete dominance and option D incomplete dominance. Statement पे गौर करना है। Genes which are widely located in chromosomes and have chances of separation by crossing over. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन डैश स्टेज। ऑप्शन ए डायकिनेसिस, ऑप्शन बी एनाफेज, ऑप्शन सी लैप्टोटीन एंड ऑप्शन डी पैचिटी। नेक्स्ट आंसर की चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसका राइट ऑप्शन है डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है डी पैचिटीन। Question number 25. If the percentage of crossing over is 10 between two genes, then the distance between the two genes will be option A 5 Morgan, option D B 10 Morgan, option C 20 centimorgan and option D 40 map unit. Question number 26. Linked genes can be separated by anywhere from dash to dash centimorgan. Option A 0 to 100, option B 50 to 100, option C 0 to 25 and option D 0 to 50. Question number 27. In crossing over,
Two non-sister chromatids first break at the corresponding points due to the activity of a nuclear enzyme. I repeat the statement. In crossing over, two non-sister chromatids first break at the corresponding points due to the activity of a nuclear enzyme. Option A, endonuclease. Option B, transcriptase. Option C, aldolase. And option D, none of these. Question number 28. The movement of chiasmata is known as option A, diakinesis. Option B, terminalization. Option C, crossing over. And option D, recombination. आई होप आपने क्वेश्चन 25 से 28 के आंसर्स को मार्क कर लिया होगा। आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है 10 मॉर्गन। 10 जीन्स का अगर परसेंटेज उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर की निकालनी है तो डिस्टेंस डेफिनेटली विल बी 10 मॉर्गन। एंड क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है डी, लिंक जीन्स कैन बी सेपरेटेड बाय एनीवेयर फ्रॉम 0 to 50 सेंटीमॉर्गन। ये डिस्टेंस है बिटवीन लिंक जीन्स। एंड क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसका राइट ऑप्शन है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है बी, टर्मिनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29, percentage of recombination frequency between the two genes are option A 75%, option B 100%, option C 50% and option D 25%. Question number 30. First genetic map was made for option A rat, option B fly, option C Drosophila and option D butterfly. Question number 31. Accurate mapping of genes can be done by option A 2-point mapping, option B 3-point mapping, option C single gene mapping and option D none of these. Question number 32. In Drosophila, eye color is sex-linked and red eye color is dominant to white eye color. Which of the following are not possible in a cross between a red eye male and a heterozygous female? स्टेटमेंट में गौर करना है आपने कि क्रॉस बताया गया है बिटवीन अ रेड आई मेल एंड हेट्रोजाइगस फीमेल और हमने ऑप्शन चूज करना है जो कि पॉसिबल नहीं है इन इस क्रॉस के रिजल्ट में। ऑप्शन ए है जी रेड आई मेल, ऑप्शन बी है वाइट आई मेल, ऑप्शन सी है कैरियर फीमेल एंड ऑप्शन डी है होमोजाइगस वाइट आई फीमेल। आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है सी 50%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50% है, इससे बिलो हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती जी। 30 का जो आंसर है दैट इज सी ड्रोसोफिला। फर्स्ट जेनेटिक मैप जो है वो ड्रोसोफिला के लिए बनाया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन है बी 3-point मैपिंग, जिसको 3-point म्यूटेशन भी कहते हैं। एंड 32 का राइट ऑप्शन है डी, होमोजाइगस वाइट आई फीमेल पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, देखिए जी हमें क्रॉस बताया गया है बिटवीन अ रेड आई मेल, इसका मतलब है कि जो XW+ एंड Y ये थी क्रोमोसोम मेल के और फीमेल हेट्रोजाइगस फीमेल है। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि उसके पास एक XW+ है यानी रेड आई वाला है क्रोमोसोम और एक है X जिसके ऊपर रेड आई की जीन लोकेट नहीं कर रही। अब हम अगर गैमेट्स भी बना के चेक कर ले तो गैमेट्स बना के आप चेक करें तो फीमेल जो होगी
वो उसके पास एक जो है वो रेड आई का एक्स क्रोमोसोम जरूर आएगा फ्रॉम हर फादर, यानी कि जो रेड आई मेल है उससे। तो वो होमोजाइगस वाइट आई नहीं हो सकती है, वो हमेशा हेट्रोजाइगस ही रहेगी फीमेल। और जो मेल है वो रेड आई भी हो सकता है और वाइट आई भी हो सकता है। तो इसमें हमें मतलब ये भी ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, यही स्टेटमेंट के साथ हमारे पास आंसर की ऑप्शन वेरी कर सकती है कि तो मेल के क्या चांसेस हैं आने के। तो मेल जो है वो रेड आई भी हो सकता है और वाइट आई भी हो सकता है। Question number 33. Rose gene is used as selectable marker for transformation in Drosophila. It produces an enzyme required for the synthesis of. Rose gene is used as a selectable marker for transformation in Drosophila. It produces an enzyme required for the synthesis of option A, wing pigment, option B, eye pigment, option C, both eye and wing pigment, option D, thorax pigment. Question number 34. The term in which duplicated region is not situated adjacent to the normal section is option A, tandem duplication, option B, reverse tandem duplication, option C, displaced duplication, and option D, transported duplication. Question number 35. A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, H is example of duplication की example तो हमने choose करनी है कि ये A, B, C, D and E, F, G and D, E, F, H ये मेकअप जो है वो किस duplication category में आता है। ऑप्शन ए है जी tandem duplication, ऑप्शन बी है reverse duplication, ऑप्शन सी है heterobranchial duplication and ऑप्शन डी है homobranchial duplication. Question number 36. Crydo chat is caused due to the missing portion of short arm of chromosome number. Option A, chromosome number 5. Option B, chromosome number 13. Option C, chromosome number 14. And option D, chromosome number 6. आंसर की से चेक करते हैं जी। रोजर जीन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है आई पिगमेंट के लिए। ड्रोसोफिला में एंजाइम प्रोड्यूस करती है xanthine डिहाइड्रोजिनेज, और ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है जी आई पिगमेंट बनाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन है सी, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन जो है इसको कहेंगे कि जिसमें जी रीजन जो है दैट आर नॉट सिचुएटेड एडजेसेंट टू नॉर्मल सेक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन होगा डी, होमोब्रेंकियल डुप्लीकेशन। और ये होमोब्रेंकियल डुप्लीकेशन का मतलब होगा कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डुप्लीकेटेड सेगमेंट जो है वो प्लेट्स करे इटसेल्फ एट द सेम पोजीशन ऑन द सेम क्रोमोसोम नंबर। जो आर्म है उसका वो भी सेम रहेगा, क्रोमोसोम भी सेम रहेगा, लेकिन जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो डिस्प्लेस्ड होकर डुप्लीकेट होगा। ये डुप्लीकेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें हमें ऑप्शन वेरी करके भी किसी और टाइप, यानी रिवर्स डुप्लीकेशन के लिए भी एग्जांपल हो सकती है, ये टेंडम डुप्लीकेशन की भी एग्जांपल हो सकती है इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है A5। क्राइडो चार्ट सिंड्रोम बेसिकली ये डिलीशन जो है वो म्यूटेशन की वजह से होता है, और इसको 5p सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको 5p सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 5 के आर्म पे जो है डिलीशन होती है, जीन की मिसिंग पोर्शन होता है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। इसको क्राइडो चार्ट का दूसरा नाम है 5p सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन बर्किट्स लिम्फोमा ड्यू टू द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन द टिप ऑफ क्रोमोसोम डैश एंड डैश एक्सचेंज। क्रोमोसोम नंबर चूज करने हैं। ऑप्शन ए क्रोमोसोम नंबर 8, ऑप्शन बी क्रोमोसोम नंबर 14, ऑप्शन सी क्रोमोसोम नंबर 13 एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। Question number 38. When the extra chromosome are like is isochromosome, the term it termed as option A primary trisomic, option B secondary trisomic, option C tertiary trisomic,
and option D, none of these. Question number 39. Which of the following is not a chromosome instability syndrome? Option A, Klinefelter syndrome. Option B, ataxia. Option C, Fanconi syndrome. And option D, Bloom syndrome. हमने वो चूज करना है जो कि क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी नहीं है. Question number 40. Dye-George syndrome is caused by deletion of chromosome number. Option A, chromosome number 4. Option B, chromosome number 7. Option C, chromosome number 15. And option D, chromosome number 22. आंसर की से चेक करते हैं जी. जो बर्किट्स लिम्फोमा है इसको हम ऐसे भी जानते हैं. इट इज़ द फास्ट ग्रोइंग ह्यूमन कैंसर है एंड इट इज़ कैंसर ऑफ द इम्यून सिस्टम बी सेल्स. और जी इसके लिए जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डी, यानी क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 14 दोनों की जो है वो टिप्स एक्सचेंज होती हैं. तो ये इसका राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. एंड क्वेश्चन नंबर जो 38 है जी उसका राइट ऑप्शन है बी, सेकेंडरी ट्राइसोमिक. ट्राइसोमी बेसिकली क्या है? ट्राइसोमी की डिफरेंट कैटेगरी हैं. यहाँ पे सेकेंडरी ट्राइसोमी है तो पार्शियल ट्राइसोमी या टर्शियरी ट्राइसोमी के रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें एक ना एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा. और जो है जी सेकेंडरी ट्राइसोमी कंडीशन है, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, उसका एक आर्म डुप्लीकेट होगा और इसलिए इसको आइसोक्रोमोसोम कहते हैं कि उसका क्रोमोसोम की आर्म की या उसके जो है क्रोमाटिड है उसकी डुप्लीकेशन होती है. एंड क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है ए, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम. क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जी इसमें जेनेटिक मेकअप मेल का XY होता है. तो इसमें ये क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी में जो है वो क्रोमोसोम का कंप्लीट पार्ट या उसका एक पोर्शन जो है वो लूज हो जाता है, डिलीट हो जाता है. तो ये क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो है वो इंस्टेबिलिटी से बिलोंग नहीं करता क्योंकि इसमें तो एक ट्राइसोमी कंडीशन, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स जो है वो प्रेजेंट होता है. एंड क्वेश्चन नंबर 40 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है 22, यानी कि ऑप्शन डी. और ये डाई-जॉर्ज सिंड्रोम जो है इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 22 है इसकी डिलीशन हो जाती है, उसके एक सेगमेंट की डिलीशन होती है और इसकी वजह से कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम या जिस तरह क्लेफ्ट पैलिड है या मेंटल रिटार्डेशन है वो चाइल्ड को फेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 41. रेनर कॉम्प्लेक्स इज option A, set of chromosome inherit as a single unit. Option B, set of chromosome inherit as a double unit. Option C, set of chromosome inherit as a triple unit. And option D, set of chromosome inherit as a multiple unit. Question number 42. Robertsonian translocation is termed as option A, whole arm fusion occur in non-homologous chromosome. Option B, whole arm fusion occurs in homologous chromosome. Option C, half arm fusion occurs in non-homologous chromosome. And option D, half arm fusion occurs in homologous chromosome. कंफ्यूजिंग आंसर की जो है ऑप्शन की स्टेटमेंट है, ऑप्शन की स्टेटमेंट को बार बार पढ़िएगा. क्वेश्चन नंबर 43. एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन इज ऑप्शन ए, सिकल सेल एनीमिया. ऑप्शन बी, फेनिलकेटोनुरिया. ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम. एंड ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. आई होप आपने अपने आंसर्स को मार्क कर लिया होगा. आंसर की से चेक करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन है ए. रेनर कॉम्प्लेक्स या रेनर सिंड्रोम में एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिट होता है एज अ सिंगल यूनिट. तो जी इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम की वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन टेट्राड की बजाय जो है एक बाइवेलेंट रिंग के तौर पे हो रही होती है इस रेनर कॉम्प्लेक्स में. एंड क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन है बी,
रॉबर्टसोनियन मतलब है जी रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन इन विच होल आर्म फ्यूजन occurs in homologous chromosome. And question number 43 का राइट ऑप्शन है डी, both A and B. Sickle cell anemia and phenylketonuria both are example of chromosomal aberrations. Question number 44. Yellow color of mouse is generated by dash mutation. Option A duplication, option B deletion, option C inversion, and option D translocation. Question number 45. Which of the following is the example of inversion? Option A chromosome number 22 and 9. Option B chromosome number 8. Option C chromosome number 14. And option D chromosome number 3. Question number 46. In pericentric inversion, the inversion loop involves dash strand. Option A 1, option B 2, option C 3, and option D 4. Question number 47. In man, which of the following genotype and phenotype could be the correct result of aneuploidy in sex chromosome? Statement दोबारा पढ़ रही हूँ जी, गौर कीजिएगा. In man, which of the following genotype and phenotype could be the correct result of aneuploidy in sex chromosome? Option A 22 pairs plus Y female. Option B 22 pairs plus double X female. Option C 22 pairs plus double XY male. And option D 22 pairs plus triple XY female. आंसर की से चेक करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन है बी डिलीशन. डिलीशन म्यूटेशन कॉज करती है येलो कलर रेड्स में. एंड क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन है डी क्रोमोसोम नंबर 3. एंड क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन है डी यानी कि 4. पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, ये इन्वर्जन के डिफरेंट टाइप्स हैं, पेरिसेंट्रिक, पैरासेंट्रिक. और जो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन है इसमें जो अराउंड द सेंटर जो अराउंड द सेंट्रोमेयर जो है वो इन्वर्जन होती है, जिसमें 4 स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व होते हैं यानी क्रोमेटिड्स उसके सारे इन्वॉल्व होते हैं क्रोमोसोम के. एंड क्वेश्चन नंबर 47 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है सी. मतलब एन्यूप्लॉइडी का मतलब जी एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और उसमें जो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो दोनों कैटेगरीज होंगी उसमें 22 पेयर्स ऑटोसोम के, और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 होंगी. ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 48. सीलियक डिजीज कॉज्ड ड्यू टू ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी एडवर्ड सिंड्रोम, ऑप्शन सी पैश्चर सिंड्रोम, एंड ऑप्शन डी क्लेनफेल्टर सिंड्रोम. Question number 49. The number of chromosome a child with Down syndrome has. Option A 45, option B 46, option C 47, and option D 48. Question number 50. Person with Down syndrome has an IQ of option A 20 to 30, option B 40 to 50, option C 60 to 70, and option D none of these. आंसर की से चेक करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 48 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है ए डाउन सिंड्रोम. सीलियक डिजीज जो होती है, ये सीलियक डिजीज जो है वो इम्यून डिजीज है, या इसको ग्लूटेन रेजिस्टेंस भी कहते हैं.
और ये डाउन सिंड्रोम की क्योंकि डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ डिजीजेस इंक्लूड हैं, तो सीलियक डिजीज इज वन ऑफ दोज। और इसमें जिस पर्सन को ये होगी तो उसमें वो ग्लूटेन रेजिस्टेंस होगी, और उसकी वजह से वो वीट, राई एंड बार्ले जो ग्लूटेन कंटेनिंग फूड है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 49 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है सी 47, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। और जो डाउन सिंड्रोम है इसको इसमें 21st जो क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 50 जो है जिसका राइट ऑप्शन होगा, जो डाउन सिंड्रोम में पर्सन मेंटली रिटार्डेड होता है उसका आईक्यू जो है वो बहुत ही लो होगा, 40 to 50, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपने अपने क्वेश्चंस को जो है वो मार्क किया होगा साथ साथ पूरी टेस्ट के साथ, और अपने जो स्कोर्स हैं उसको हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपने क्वेश्चन जो नोट डाउन किए होंगे उनको सामने रख के अपने जेनेटिक्स वाले पोर्शन को प्रिपेयर कीजिएगा। और अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं टेस्ट में, तो अपनी तैयारी जो है उसको उसी डिटर्मिनेशन के साथ कंटिन्यू रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मज़ीद टेस्ट के कंडक्ट होने तक आपके साथ हम मज़ीद important lectures और टेस्ट ज़रूर शेयर करेंगे। So good luck to everyone and thanks for your time. Allah Hafiz.